part of India. One nation, one vision, one identity. मेरी पहचान मेरा भारत. I, Jahannath Srivastava from grade 7B. I, Chaman Kailash from grade 7A. Wishing you all a blessed morning. How blissful this morning is, when we are gathered to celebrate our 76th Republic Day. Republic Day marks the adoption of India's constitution and the country's transition. School band attention. Guard of honor. Parade. मेहमान के लिए जनरल सैल्यूट सैल्यूट. Before we could begin today's celebration, it is necessary to intercede the blessings from our Heavenly Father. So, I call upon my dear friends to lead us into prayer. सुबह सवेरे लेकर तेरा नाम प्रभु, करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु. सुबह सवेरे लेकर तेरा नाम प्रभु, करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु. करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु. शुद्ध भाव से तेरा ध्यान लगाए हम, विद्या का वरदान तुम्हीं से पाए हम. शुद्ध भाव से तेरा ध्यान लगाए हम, विद्या का वरदान तुम्हीं से पाए हम. हाँ, विद्या का वरदान तुम्हीं से पाए हम. तुम्हीं से है आवाज तुम्हीं अंजाम प्रभु, करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु. सुबह सवेरे लेकर तेरा नाम प्रभु, करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु. शुरुओं का
महान गगन को छू ले हम। तुम्ही से है हर सुबह, तुम्ही से शाम प्रभु, करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु। सुबह सवेरे लेकर तेरा नाम प्रभु, करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु। हाँ, करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु। हाँ, करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु। Thank you, dear friends, for invoking God's blessings. My nation's flag is my pride and symbol of freedom. Now, I request our chief guest, Sister Angelina, to hoist the flag. Now, I request Atria to escort the guest near the pole. विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, सदा शक्ति सरसाने वाला, प्रेम सुधा बरसाने वाला, वीरों को हर्षाने वाला। मातृभूमि का तन मन सारा, मातृभूमि का तन मन सारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। विजयी विश्व तिरंगा प्यारा। Said that guest is equivalent to God, and a smile is a welcome sight that invites people in. Now, my friend Pranati from grade 6B will welcome the gathering. A warm welcome is not just a greeting. It is the promise of a meaningful connection and a memorable experience. Respected dignitaries, teachers, parents, and my dear friends, a pleasant morning to all. It is an immense honor for me to stand before you all as we gather to celebrate the 76th Republic Day of our beloved nation, India. On this glorious occasion of Republic Day, I extend a warm and heartfelt welcome to each one of you present here today. It is a moment of great pride and joy as we come together to celebrate the 76th Republic Day of our beloved nation. I would first like to welcome our Honorable Chief Guest, Reverend Sister Angelina, whose presence today graces us with immense honor. We are deeply grateful for your valuable time and participation in this celebration.
To express our appreciation and respect, I kindly request Mrs. Priscilla Ma'am to present a rose to our chief guest, symbolizing our gratitude and administration. A warm welcome to you, dear sister. Our warmest welcome to Sister Vincy, Sister Lydia, Sister Marceline DeCosta, and all the sisters of Nazareth Convent whose blessings and guidance always led us on the path of truth and knowledge. Your presence here is always a source of encouragement. I kindly request our teachers, Mrs. Nayana Ma'am and Mrs. Juliana Ma'am and Mrs. Caroline Ma'am, to present a rose to sisters as a token of respect and gratitude. A heartfelt welcome to all our teachers and non-teaching staffs whose dedication and commitment shape us into a responsible citizen of tomorrow. Thank you for your constant support and encouragement. A warm welcome to our dear parents whose support and encouragement are the foundation of everything we do. We are forever grateful for your love and guidance. And finally, I extend a warm welcome to all my fellow students. Your enthusiasm and energy is what makes this day even more special. As we come together to celebrate the unity, diversity, and strength of a great nation, let us remember the values enshrined in our Constitution and the sacrifices made by our freedom fighters to give us the freedom and the rights we enjoy today. Once again, a warm welcome to each one of you. Let us celebrate the Republic Day with pride, joy, and renewed commitment of our country. Thank you. Jai Hind. प्रसिद्ध बाराकर श्री राजेंद्र कृष्णा जी अपनी एक कविता में भारत देश को वर्णन करके कहते हैं, जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जी हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, आज के दिन के विशेषता के बारे में मेरा दोस्त चिराग मनोहर सुवर्णा दो शब्द कहेगा। आदरणीय अतिथियों, प्रधानाचार्य जी, सम्मानित शिक्षकों और मेरे प्यारे मित्रों, आज हम गणतंत्र दिवस के अवसर पर हम एकत्रित हुए हैं। आज हम एक ऐसा दिन मनाने के लिए हम एकत्र हुए हैं जो न केवल अंग्रेजों पर हमारी जीत का प्रतीक है, बल्कि लोकतंत्र भावना की जीत का भी प्रतीक है। मेरे साथियों, 15 अगस्त 1947 पर हमारे देश गुलामी की भेड़िया से आज़ाद जरूर हो गया था, लेकिन देश की शासन व्यवस्था को चलाने के लिए हमारे पास अपना संविधान नहीं था। संविधान के बगैर देश को चलाया नहीं जा सकता था। ऐसे में तो तब एक संविधान सभा के गठन ने किया और संविधान बनाया गया। 26 जनवरी 1950 को हमारे देश के संविधान में एक लागू हुआ था। इस दिन हमारी अखंडता का प्रतीक है। हमारे संविधान हमारे देश की आत्मा है, जो एकता, स्वतंत्रता और समानता का प्रतीक है। ये हमें बताता है कि हम एक शक्तिशाली और स्वतंत्र राष्ट्र है, जो अपने नागरिकों के अधिकारों और स्वतंत्रता की रक्षा करता है। अब हम हमारे देश के उन महान नेताओं को याद करते हैं जिन्होंने हमारे स्वतंत्र संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। हम उनके बलिदान और साहस के लिए एक सलाम करेंगे। अब हम हमारे देश के एक विकास और प्रगति के लिए प्रतिबद्ध हैं। हम अपने देश को एक शक्तिशाली और समृद्ध राष्ट्र बनाने के लिए काम करेंगे। आइए हम अपने देश के लिए एकजुट हो और इसकी तरक्की काम करेंगे। जय हिंद। गणतंत्र दिवस की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद चिराग आपके विचारों के लिए। Mass PT exercise is all about strengthening muscles, improving health, and also for enjoyment. Now we will begin Mass PT exercise.
Freedom in mind, faith in our hearts, memories in our souls. Let's salute the nation. I would like to call upon Fatima Insha from grade 6B to express the importance of the day. We are Indians, firstly and lastly by B.R. Ambedkar. Good morning, one and all. Today, I'm standing in front of you to deliver a speech on Republic Day. Before moving forward, I would like to wish you all a happy Republic Day. As you all know, today we are gathered here to celebrate the 76th Republic Day of our India. On this day, in 1950, our Constitution came into effect. However, it was adopted on 26th of November 1949 under the chairmanship of beloved Dr. B.R. Ambedkar. And we all know him as the father of Indian Constitution. The Constitution is like a boss of all laws in a country. It is a document that spells out how the government works and what right do people have. Do you know how much struggle our freedom fighter had to do in order to get their own constitution? Our constitution is not just a legal document. It is an embodiment of dreams, hopes, and aspirations of millions of Indians who fought for freedom. It is our collective responsibility to safeguard the democratic ideal that form the bedrock of our nation. As a citizen, we must actively participate in the democratic process, exercise our right to vote, and contribute to the betterment of our society. Republic Day is not just a day of festivity, it is a reminder of our duty towards the nation. Let's strive to build an inclusive, harmonious society where rights of every individual are respected and diversity is celebrated. As we march forward, let's remember that the strength of our nation lies in unity of its people. On this Republic Day, let's take a pride in our country and pledge to work towards the future where justice, liberties, and equality prevails. Jai Hind and Vande Mataram. Thank you. Now, I request our chief guest, Sister Angelina, to share her message on this auspicious day. Good morning, dear children and staff of Nazareth School. It is a great honor for me to hoist our national flag on this special day. Republic Day reminds us of the values of truth, justice, and equality to our Constitution teaches us. As young citizens, you are the future of our nation. Study well, be kind, and always strive to make India proud. Thank you and Jai Hind. Thank you, sister, for sharing your precious thoughts. Music is a piece of art that goes in the ears and then straight to the heart. My friends are ready with a patriotic song. जान से प्यारा है, सबसे न्यारा गुलिस्तान हमारा है। भारत हमको जान से प्यारा है, सबसे न्यारा गुलिस्तान हमारा है। सदियों से भारत भूमि दुनिया की शान है, भारत माँ की रक्षा में जीवन कुर्बान है। भारत हमको जान से प्यारा है, सबसे न्यारा गुलिस्तान हमारा है। भारत जिसका नाम, धरती अंबर पर्वत नदियाँ है जो इसकी शान।
स्वर्ग से सुंदर देश हमारा भारत जिसका नाम, धरती अंबर पर्वत नदियाँ है जो इसकी शान। हम भारत के रहने वाले भेदभाव ना जाने, जाति धर्म को छोड़ के सारे आगे बढ़ना जाने। हम भारत के रहने वाले भेदभाव ना जाने, जाति धर्म को छोड़ के सारे आगे बढ़ना जाने। हर कष्टों को दूर करे हम वो मुश्किल आसान, धरती अंबर पर्वत नदियाँ है जो इसकी शान। स्वर्ग से सुंदर देश हमारा भारत जिसका नाम, धरती अंबर पर्वत नदियाँ है जो इसकी शान। वो हम सबके सत्कर्मों से रोशन इसका नाम, शक्ति मिले हम सबको यहाँ पर दे दो यह वरदान। वो हम सबके सत्कर्मों से रोशन इसका नाम, शक्ति मिले हम सबको यहाँ पर दे दो यह वरदान। गुलशन बन जाए जग सारा कर दो यह ऐसा, धरती अंबर पर्वत नदियाँ है जो इसकी शान। स्वर्ग से सुंदर देश हमारा भारत जिसका नाम, धरती अंबर पर्वत नदियाँ है जो इसकी शान। ಗಣರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಬಂದಿದೆ, ಸಡಗರ ನಾಡಿಗೆ ತಂದಿದೆ. ಗಣರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಬಂದಿದೆ, ಸಡಗರ ನಾಡಿಗೆ ತಂದಿದೆ. ಸಂವಿಧಾನದ ಘನತೆಯ ಸಾರಲು, ಸಂವಿಧಾನದ ಘನತೆಯ ಸಾರಲು ಭಾರತ ಬಾವುಟ ಏರುತ್ತಿದೆ, ಬಾವುಟ ಭಾರತ ಬೀಗುತ್ತಿದೆ. ಗಣರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಬಂದಿದೆ, ಸಡಗರ ನಾಡಿಗೆ ತಂದಿದೆ. Thank you, dear friends, for your melodious song. It really made us feel the patriotism. ಒಂದೇ ಒಂದೇ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ, ಈ ದೇಶದೊಳಗಿದ್ದರೂ ಭಾರತ ನಮಗೊಂದೇ ಎನ್ನುವ G.S. ಶಿವರುದ್ರಪ್ಪನವರು ರಚಿಸಿರುವ ಕವಿತೆಯ ಸಾಲುಗಳನ್ನು ನೆನಪಿಸುತ್ತಾ
ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಶುಭ ಮುಂಜಾನೆಯ ಶುಭಕಾಮನೆಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಇದೀಗ ನಾನು ಕಾರ್ತಿಕನನ್ನು ಈ ದಿನದ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲು ವಿನಂತಿಸುತ್ತೇನೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗಣರಾಜ್ಯೋತ್ಸವದ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ನಾವಿಂದು 76ನೇಯ ಗಣರಾಜ್ಯೋತ್ಸವವನ್ನು ಆಚರಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಭಾರತ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ರಾಷ್ಟ್ರವಾದ ದಿನ ಹಾಗೂ ಭಾರತ ಸಂವಿಧಾನ ಅಸ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ಬಂದ ದಿನ 26 ಜನವರಿ 1950ರಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಸಂವಿಧಾನವನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸಿದ ದಿನದ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ಈ ಗಣರಾಜ್ಯೋತ್ಸವವನ್ನು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಭಾರತವು ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ಸಾರ್ವಭೌಮ, ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ, ರಾಜ್ಯವೆಂದು ಘೋಷಿಸಿಕೊಂಡಿತ್ತು. ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಎಂದರೆ ಪ್ರಜೆಗಳಿಂದ, ಪ್ರಜೆಗಳಿಗಾಗಿ, ಪ್ರಜೆಗಳಿಗೋಸ್ಕರ ಇರುವ ಆಡಳಿತ. ಭಾರತ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಸಂವಿಧಾನ ಹಾಗೂ ಜಾತ್ಯತೀತ ರಾಷ್ಟ್ರವನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುತ್ತದೆ. ಭಾರತ ಸಂವಿಧಾನವು ಕಾರ್ಯಾಂಗ, ಶಾಸಕಾಂಗ ಹಾಗೂ ನ್ಯಾಯಾಂಗಗಳನ್ನು ಸರ್ಕಾರದ 3 ಮುಖ್ಯ ಅಂಗಗಳಾಗಿ ವಿಭಜಿಸುತ್ತದೆ. ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಾನೂನುಗಳು ಸಂವಿಧಾನಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿರಬೇಕು ಎಂಬ ನಿಯಮವಿದೆ. ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿದಂತೆ 1950ರಲ್ಲಿ 26 ಜನವರಿ ಭಾರತ ಸಂವಿಧಾನ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದಿತ್ತು. ಭಾರತ ಸಂವಿಧಾನದ ಪಿತಾಮಹ ಕರೆಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಡಾಕ್ಟರ್ BR ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ಕರಡು ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದರು. ಭಾರತ ಸಂವಿಧಾನವನ್ನು ರೂಪಿಸುವಲ್ಲಿ ಅವರ ಪಾತ್ರ ಬಹಳ ಮಹತ್ವದ್ದು. ಭಾರತ ಸಂವಿಧಾನವನ್ನು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ. ದೆಹಲಿಯ ಸಂಸತ್ ಭವನದಲ್ಲಿ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ, ಅಂದರೆ ಭಾರತ ಸಂವಿಧಾನವು ರಚನೆಯಾಗಿ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 8 ಅನುಚ್ಛೇದಗಳು, 22 ಭಾಗಗಳು, 395 ವಿಧಿಗಳಿದ್ದವು. ಆ ಬಳಿಕ ಭಾರತ ಸಂವಿಧಾನವನ್ನು ಒಟ್ಟು 105 ಬಾರಿ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಈಗ ಭಾರತ ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ 12 ಅನುಚ್ಛೇದಗಳು, 2 ಭಾಗಗಳು, 470 ವಿಧಿಗಳಿವೆ. ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರು ಭಾರತ. ವಿಶ್ವದ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಲಿಖಿತ ಸಂವಿಧಾನ ಹೊಂದಿರುವ ದೇಶ ನಮ್ಮ ಭಾರತ. ನಮಗೆ ಹೆಮ್ಮೆಯ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಈ ದಿನದ ಮಹತ್ವವನ್ನು ತಿಳಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ಕಾರ್ತಿಕಳಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. We often take for granted the very things that most deserve our gratitude. As we come to an end of the program, before concluding, I call upon Nasuha from grade 7th A to express the words of gratitude. Freedom in mind, faith in words, pride in our heart, memories in our souls. Let us salute the nation on Republic Day. Good morning to one and all present here. I, Nasuha, feel honored and privileged to get an opportunity to propose a vote of thanks on this special occasion of our Republic Day celebration. It is great honor for me to be here to celebrate this Republic Day. On this auspicious occasion, we thank Almighty God for His abundant blessings. First and foremost, I extend a heartfelt gratitude to our esteemed chief guest, Sister Angelina, for gracing this event with her presence and inspiring with her words of wisdom. Your encouragement means a lot to us, and we are truly honored by your presence. Thank you, Sister. I would like to thank Sister Vincy, Sister Lydia, and all the sisters of Nazareth Convent for their continuous support and encouragement. Thank you, dear sisters. On behalf of the management, I sincerely thank all the parents and well-wishers for their generous support and selfless service that they have rendered during these days. Thank you, dear parents. A sincere thanks to the teaching and non-teaching staffs to their unwavering support and encouragement. Your guidance has been instrumental in shaping this program and fostering a spirit of healthy environment among us, and also for making today's function success. Thank you, dear. Thank you. Special thanks to you all, my dear friends, and all who participated in today's program, and also thanks to your parents who supported and encouraged us in different ways. Thank you, dear parents. Once again, I thank each and every one of you. Let us carry forward the spirit of Republic Day and always work towards the progress of our nation. Thank you and Jai Hind. Like to say, let us not pass this Republic Day as any other holiday. Instead,
look within and think that whether we are fulfilling our fundamental duties or not. Thank you for listening us patiently, and once again a very happy Republic Day. Jai Hind, Jai Bharat.